Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your homes. So, class 4, it's your English lecture and it's your Wednesday and Thursday lecture for both Group A and B. So, Group B will listen to this lecture on Wednesday and Group A will listen to it on Thursday. So it's for the both groups, and it's for 30th June and 1st July. So we are going to start our English lecture. So open your booklet and have your pencils and erasers in your hand. So let's begin. Okay, so open the page number 19. Okay, so first of all, write the date and then write see work and then write the day. Okay, so the question is find out the odd one from the sentences below and then circle it. वो कह रहे हैं कि नीचे से आपने ऑड मीन जो सबसे मुख्तलिफ है हमने उसको ढूंढना है नीचे सेंटेंसेस में और उस पर सर्कल करना है. ऑड मीन जो सबसे डिफरेंट है. ओके, जैसे ना 1 2 3 4 वर्ड्स थी, इसमें जो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, हमने उसको अलग करना है, उसको ढूंढना है, उसको अलग करके उसको सर्कल करना है. So the number one is cat, dog, cow and lion. Okay, so what is the difference between these four words? So these four are animals, right? So, but what is the difference between these four? You can think about their food, right? So what does cat eat? Cat eats meat. Dog also eat meat. Then cow, no, the cow don't eat meat. Cows are herbivores, right? The cows eat plants. Okay, cows कभी कभी इंसेक्ट्स भी खाते हैं लेकिन मीट नहीं खाते. ठीक है, they are herbivores. Cows eat plants, and then lion also eat the flesh of animals and the meat. ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी खाता है. जो मरे हुए होते हैं, जो इंजर्ड होते हैं या वैसे मीट होता है वो खाता है. ठीक है, तो lion, cat and dog, these three animals eat meat, but the cow doesn't eat meat, right? The cow eat insects, or mostly the cows eat plants. Okay, plants, the green food. Okay, so the difference between these four is cow. So we will circle the cow in it. Okay, so the cow is different from these three animals. Next is carrot, apple, peach and orange. Okay, what is a carrot? Carrot is vegetable, apple, peach and orange are fruits. So the carrot is the odd one out, right? So we will circle the carrot here. So now come to the third one: laptop, mouse, cat and keyboard. Okay, so what are the similar? Yes, keyboard, mouse and laptop are the three similar things. ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर के पार्ट्स देंगे तो उसमें कीबोर्ड आता है, माउस आते हैं, और लैपटॉप भी जो है वो भी आप देखें कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप जो है पूरे कंप्यूटर को ही बोलते हैं, राइट? सो द कैट इज़ द different between these three, right? Cat is the totally different thing. Cat is an animal, so this is different from these three things, because these three things are the parts of a computer, right? These are the machineries, and now so the cat is the odd one out, so we will circle the cat here. Now come to the fourth one: tea, coffee, pizza and milk. Okay, so chai, coffee, pizza or milk. So you can see that these three, tea, coffee and milk, are the liquid, right? These are the drinks, but pizza is the solid thing. Pizza is something that we eat. We don't drink pizza, right? So we will circle the pizza here, right? So it's really easy, right? We have to circle the odd one, जो सबसे मुख्तलिफ है. So number 5 is scale, cycle, pen and pencil. So इसमें कौन सी तीन सिमिलर चीज़ें हैं? आप गौर से देखें कौन सी आपको चीज़ें सेम लग रही हैं. स्केल है, साइकिल है, पेन और पेंसिल है. यस, पेन, पेंसिल और स्केल जो है ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सब स्टेशनरी में आते हैं, बट द साइकिल डजंट कम इन स्टेशनरी, राइट? साइकिल इज़ अ व्हीकल. सो वी विल सर्कल द साइकिल हियर. Number 6 is king, chief minister, queen and prince. Okay, so chief minister, queen and king are queen, prince and king are just similar, right? king किसको कहते हैं? बादशाह. prince और queen किसे कहते हैं? मलका को. and the prince is the one who is the son of the king. So what we will write here? So
So what is the difference here between these three things? किंग है, बादशाह, प्रिंस, शहज़ादा, क्वीन, मलका, ठीक है. ये तीनों जो हैं कि एक ही चैम्बर से, यानी आप कह सकते हैं कि एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है. हम इनको कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में आते हैं. मतलब चीफ मिनिस्टर बिलोंग्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, राइट. चीफ मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर्स जो होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है. दीज बिलोंग्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ठीक है. ये मिनिस्टर्स होते हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं. लेकिन जो क्वीन, प्रिंस और किंग हैं, ये आप इनको कह सकते हैं कि ये महल में रहते हैं, राइट. दे बिलोंग्स फ्रॉम द रॉयल थिंग, ठीक है. इनका इनका एक अलग काम होता है और चीफ मिनिस्टर्स का अलग काम होता है, राइट. जैसे पहले वक्तों में क्वीन होते, जो किंग और क्वीन, प्रिंस ये होते थे, ये हुक्म देते थे, ठीक है. लोग इनकी बातें मानते थे. बट नाउ द चीफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, दे गिव सम ऑर्डर्स टू द पीपल. सो दिस दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, क्वीन, प्रिंस एंड किंग. बट द चीफ मिनिस्टर इज टोटली ऑपोजिट. सो ऑड वन आउट is the chief minister, so we'll circle the chief minister here. So now come to the seventh sentence. Okay, so it's really easy. Last year also very easy. You all have to guess them and you all have to put circle in these. So it's really easy. You all have to think about it. I will just give you a hint. I will just read it for you. I will tell you the meaning and you have to circle by your own. Okay, roses, berries, cherries and peaches. Okay, roses, berries और cherries जो है, ये तीनों चीज़ें सेम है? नो. बेरीज, चेरीज और पीचेस जो हैं, ये सब क्या फ्रूट्स हैं, राइट. बट द रोज़ क्या फ्लावर है. तो आप देखिए इनमें से कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है. ओके, पैलेस, कैसल, ऑर्चर्ड, मैंशन. पैलेस महल को कहते हैं, कैसल किला होता है, मैंशन भी बड़े महल को बोलते हैं. ऑर्चर्ड लेकिन बिलोंग करता है, ऑर्चर्ड होता है एक बाग होता है जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है. तो आप देखिए इसमें से तीनों में से मुख्तलिफ क्या है. यू हैव टू गेस एंड राइट दिस सर्कल अगेंस्ट इट on it. Okay, so the ninth one is city, town, village and heaven. City आपको पता है शहर को कहते हैं, town कस्बे को कहते हैं, village कहते हैं गाँव को और heaven कहते हैं जन्नत को. तो देखें कौन सा मुख्तलिफ है इसमें से, right. So they come to the 10th sentence, 10th word. 11, 7, 16 and 18. ओके, अब आप देखिए 11 है, 7 है, 16, 18. अब इसमें से हम कौन सा मुख्तलिफ है सबसे, भी आपने गेस करना है कि इसमें से मुख्तलिफ क्या हो सकते हैं. ये जो चारों डिजिट्स हैं, ये चारों 2 डिजिट हैं या फिर 1 डिजिट है. इसमें से आपने देखना है कि 2 डिजिट कौन से और 1 डिजिट कौन से. अगर कोई एक बीच में से मुख्तलिफ है तो वो विल सर्कल इट, ओके, बिकॉज इट्स द ऑड वन आउट. सो डू इट वेरी केयरफुली. इट्स रियली इंटरेस्टिंग. आई होप यू विल डू इट वेरी केयरफुली. बेस्ट ऑफ लक. गुड लक माई क्लास. अल्लाह हाफिज़.